हाय एवरीवन वेलकम टू वॉइस ओडिया मीडियम। तो आज करवा आम राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया रो वन लाइनर क्वेश्चन जहाँकि ओटीटी असिस्टेंट टीचर पर हेल्पफुल रहिबो। तो फर्स्ट क्वेश्चन दी इन व्हिच ईयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश्ड। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केबे एस्टाब्लिश है 1600। नेक्स्ट, हु ग्रांटेड द चार्टर to the English East India Company? Queen Elizabeth I. Next, where was the first English factory established in India? तो इंग्रेज माने निजर फैक्टरी प्रथमे क्यों ठारे स्थापित करथिले? सूरत। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर डिड द ब्रिटिश डिफीट द पोर्तुगीज एट द बैटल ऑफ स्वाली? 1612। Next, who was the Mughal emperor when the English factory was set up at Surat? Jahangir. Next, who established the factory at Madras? Madras रे किए फैक्ट्री एस्टाब्लिश करले? फ्रांसिस डे। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर वाज द फोर्ट विलियम एस्टाब्लिश्ड एट कोलकाता? कोलकाता ठारे फोर्ट विलियम टा केबे एस्टाब्लिश हला? 1696। नेक्स्ट, बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट इन व्हिच ईयर? बैटल ऑफ पलासी केबे होइतिला? 1757। नेक्स्ट, हु लीड द ब्रिटिश फोर्सेस इन द बैटल ऑफ पलासी? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, हु वाज द नवाब ऑफ बेंगल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पलासी? जेतेबेले बैटल ऑफ पलासी युद्ध होइतिला सेतेबेले बेंगल रो नवाब किए थिले? सिराज उद्दौला। नेक्स्ट, who introduced the permanent settlement? Lord Cornwallis. Next, Pitt's India Act was passed in which year? 1784। Next, who was the first Governor General of Bengal? The first Governor General of Bengal पूछे माने वारेन हेस्टिंग एंड इंडिया पचले के हिबा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। The regulating Act was passed in which year? 1773। Who granted Diwani rights to the East India Company? Shah Alam II। In which year did the British receive Diwani rights? 1765। Next, who were defeated in the Battle of Buxar? Mir Qasim, Shahidullah and Shah Alam II। Next, Battle of Buxar was fought in which year? Battle of Buxar युद्ध केबे थिला? 1764। Next, who was the last Peshwa of the Maratha? Bajirao II। Next, the third Anglo-Maratha war ended in which year? 1818। The third Anglo-Maratha war ended in which year? 1818। Next, the second Anglo-Maratha war was fought during the tenure of Lord Wellesley। The first Anglo-Maratha war ended with which treaty? जेतेबेले फर्स्ट आंग्लो मराठा वार सरला सेतेबेले क्यों ट्रेटीटा होइतिला? ट्रेटी ऑफ सालाबाई 1782। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर डिड टीपू सुल्तान डाइड? तो टीपू सुल्तान केबे मृत्युवरण करथिले? 1749। नेक्स्ट, हु वाज द रूलर ऑफ मैसूर ड्यूरिंग द फोर्थ आंग्लो मैसूर वार? जेतेबेले फोर्थ आंग्लो मैसूर वार हला सेतेबेले से समय मैसूर रूलर किए थिले? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, द फर्स्ट आंग्लो मैसूर वार वाज fought between British and Hyder Ali। Who introduced the doctrine of lapse? Doctrine of lapse किए इंट्रोड्यूस करथिले? लॉर्ड डेलहाउसी। नेक्स्ट, who introduced the subsidiary alliance system? लॉर्ड वेल्सली। नेक्स्ट, permanent settlement was introduced in which year? केबे इंट्रोड्यूस होइतला? 1793। नेक्स्ट, Supreme Court at Kolkata was established in 1764। Cornwallis Court was introduced 1793।
Royal system was introduced by Thomas Munro. Mahalwari system was introduced by Holt Mackenzie. Chapter H of 1813 ended company's trade monopoly expected tea and China. Next. Chapter 8 1833 made Governor General of Bengal as Governor General of India. First Governor General of India किए थे Lord William Bentinck. सती was abolished in 1829 सती प्रथा जो होता by Lord William Bentinck के उच्छेद करते Lord William Bentinck. Doctrine of Laws was applied first to सतरा. Doctrine of Laws प्रथमे क्यों लागू होता 17 ठारे केबे 17 ठारे 1848. Next, Punjab was annexed in 1849. Next देखिबा Second Anglo-Sikh War केबे हितला ended 1849. First Anglo-Sikh War ended हितला 1846. Sindh War annexed in 1843. The Carnatic Wars were fought between British and French. The first Carnatic War ended 1748. Second Carnatic War ended 1754. Third Carnatic War ended 1763. Treaty of Paris के बेचला 1763 ended the Third Carnatic War. Black Hole tragedy occurred in 1756. Governor General during revolt of 1857. 1857 जो युद्ध होता पड़ासी युद्ध सिपाही युद्ध ना 1857 जो रिवोल्ट होता से समय किए थे गवर्नर जनरल ड्यूरिंग लॉर्ड कैनिंग सिपाही विद्रोह समय. नेक्स्ट Doctrine of Laws annexed in Jhansi. Awadh was annexed in 1856. Chapter Act of 1853 introduced open competition for civil service. Subsidiary alliance forced India rulers to keep British troops. Robert Clive introduced dual government. Dual government के introduce करते Robert Clive. Government in Bengal 1765. Battle of Vandiya 1760 ended French power in India. French governor during Carnatic War Joseph Francis Duplessis. Next, first Anglo-Mysore War ended के बेचला 1769. Second Anglo-Mysore War ended इतला 1784. Third Anglo-Mysore War ended इतला 1792. Treaty of Srirangapatnam was signed. केबे साइन इतला 1792. Tipu Sultan was known as the Tipu Sultan को कौन कहा जाए Tiger of Mysore. Robert Clive became the governor of Bengal in 1765. Battle of Buxar established British political supremacy in India. Regulating Act created Supreme Court at Kolkata. Pitt's India Act established Board of Control. Charter Act 1833 ended companies trade completely. English was introduced as official language in 1853. Doctrine of Laws policy aimed at annexion of India states. Nana Sahib was adopted son of Bajirao II. Bengal became first major British territory. Bombay was given by Portuguese as dowry 1661. Madras was obtained from local Nayak ruler. Kolkata was founded by Job Karnak 1690. East India Company became political power after 1765. Company rule enacted in 1858.
कंपानी रूलटा केबे स्टार्ट होता 1858 कंपानी रूल एंडेडटा केबे होता 1858 नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफरेड पावर टू ब्रिटिश क्राउन तो से टाइम रो क्राउन शासनटा आरंभ होता कंपानी रूलटा सॉरी 1858 कंपानी रूलटा सॉरी 1858 क्राउन शासनटा आरंभ होता नेक्स्ट लॉर्ड कैनिंग बिकम द फास्ट वाइसरय इन 1858 फास्ट वाइसरय किए थे लॉर्ड कैनिंग मैसूर फेल कम्प्लीटली अंडर ब्रिटिश इन 1769 थर्ड एंग्लो मराठा वार डिस्ट्रॉय बाय मराठा पावर जिससे मराठा पावर के थर्ड एंग्लो मैसूर डिस्ट्रॉय है नेक्स्ट अवध एनेक्शन एंग्रीड सिपोई रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंक्रीज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्स ब्रिटिश डिफेटेड फ्रेंच इन बैटल ऑफ मंडीवास 1760 ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद वाज साइन 1765 तो केबे साइन होता 1765 शाह आलम टू ग्रांटेड दीवानी एट अलाहाबाद रेगुलेटिंग एट रेडियोस कॉर्पोरेशन इन कंपनी Cornwallis separate judiciary and executive. Lord Wellesley expanded British Empire aggressively. Next, Dalhousie annexed Satara, Jhansi and Nagpur. Next, railway were introduced in 1853. प्रथम रेलवे लाइन जो रेलटा चलता केते पर्यंत बॉम्बे टू थाने 1853 नेक्स्ट टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डेलहाउसी समय टेलीग्राफ रेलवे एटा इंट्रोड्यूस होता पोस्टल इंट्रोड्यूस बाय डेलहाउसी सब्सिडारी एलायंस वीकेंड इंडियन रूलर्स परमानेंट सेटलमेंट बेनिफिट जमींदार्स रॉयद्वारी सिस्टम डायरेक्टली settled with peasants. Mahalwari system settled with village communities. British supremacy began after Battle of Plassey 1757. British territorial expansion completed by 1856. Revolt of 1857 ended company rule. Rise of the British power was gradually from trade to rule 1600 ରୁ 1858 तो यह था राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इंडिया किसी MCQ क्वेश्चन थैंक यू।